Hello everyone there. Welcome back. We are studying chapter database concept. In last lecture, we have seen different data types used in base. Plus, we have seen one database object also, that is tables. Today, we are going to see the remaining three database objects, that is query, form and report. So in this video, we are going to see the steps for creating all these things. So before starting the video, I would like to tell you one more thing. If you want to skip this video, you can skip because here only steps are given for creating them. The actual part we are going to see in practicals. So whenever we are going to do this practical section, that time you will know how to do. Means there you are going to see the steps for creating. Means you will learn how to create the table, forms, queries, reports. So if you want, you can skip the video or just look out the steps. So let's begin. Today we will learn how to create query, how to create form, and lastly, how to create report. So let us see one by one. Query creation. First, we are going to see the steps to create query by using wizard. By two ways we are going to create query. First, by using wizard, and the another one which we are going to see is design view. So in both ways we can see how to create the query. So first step. First, what is the first step you want to check for creating a query? So see, before creating query, you should always know that first you have to create what? Table. Okay. So table is important for all the database objects. I have explained you this thing in a previous lecture also. So saying if you want to create query, if you want to create forms, if you want to create reports. So for all these three database object, the thing which is required is table. Okay. So the important thing is table. If table is not there, then you cannot create query, you cannot create form, you cannot create reports. Okay, for all these things we need the tables. Because we are going to take data from where? From the table. Where you are storing the data? You are storing the data in the form of table. So for database, what is the main thing required? Table. Because in tables we create the data. So that's why for creating query, forms and reports, we need tables. So remember that after creating table, do the query creation. Now, we have to open a database. From left pane, click on queries object. Now you know that when you open the database, you are going to see two areas. Working areas, you are going to see two pans. What is that? Left pan and right pan. In left pane, you have seen that there are four database objects displayed. So from that, we have already seen the first database object, that is tables. So now the second one is query. So when you click on that query, what happens? This query where it is present on the left pane. When you click on that left pane of the query, then that we can see all the queries related things on the right pane. Okay. So next thing is what? From right pan, click on use wizard to create query. So क्या करना है आपको? जब एक बार आपने लेफ्ट पैन की क्वेरीज को क्लिक किया तो क्वेरीज से रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो किस साइड में आ जाएंगे? राइट पैन में. Okay, then in right pan you can, where you have to click, you will be having 2-3 options like use wizard to create query or design view. So from that, now first we are going to see how to create query by using wizard. So you click on where? You have to click on use wizard to create query. Now the next step is select name of table and shift fields from available fields list to fields in the query list by clicking on arrow button and click on next button. So see, when you read this sentence, you will feel some tricky sentence it is. Okay, so you won't understand what is this
what is the meaning of this sentence, but I will tell you. Now see what happened. Once you click on this, use wizard to create query, that time on based on which table you want to create query. अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे टेबल है, सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्टूडेंट्स का, सो उसमें आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है, एक टीचर्स के लिए बनाया था, एक लाइब्रेरी के लिए, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने टेबल्स बनाए. ओके, एक मार्कशीट का भी टेबल है. सो व्हाट हैपन, इसमें से जो टेबल, जिस टेबल के ऊपर आपको क्वेरी चाहिए, वो टेबल को आपको क्लिक करना पड़ेगा. ओके, सो ना सपोज इफ यू वांट क्वेरी बेस्ड ऑन योर स्टूडेंट टेबल. ओके, अगर आपको कौन सा स्टूडेंट किस सिटी में रहता है ये अगर फाइंड आउट करना है. ओके, इफ सपोज यू आर हैविंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेयर ऑल दिस स्टूडेंट्स lives. Okay, so that time you can click on which table. You have to click on student table. So आपको टेबल सेलेक्ट करना है, तो आपको जो क्वेरी जिसके ऊपर क्वेरी करना है उसका टेबल का नाम सेलेक्ट करो. ओके, बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, उसमें से आपको किसका क्वेरी किसके ऊपर क्वेरी करना है, आपको स्टूडेंट के ऊपर. सो सेलेक्ट विच टेबल, यू हैव टू सेलेक्ट द स्टूडेंट टेबल. नाउ उसमें से आपको कौन से फिल्ड्स चाहिए, इसके ऊपर मत ध्यान दो, मैं आपको बता रही हूँ, उसको सुनो. So which fields you want in query, means आपको रिजल्ट में क्या दिखना चाहिए. If you want that students number, roll number should be displayed, students name should be displayed, and student city should be displayed. So you have to select that fields. Okay, so whatever you need in the output, आपको output में क्या दिखना चाहिए उसके ऊपर based आपको query करना है. So if you want to see the roll number, then select that field and push it into where you have to, there will be one arrow किसमें ऐड करना है क्वेरी के लिए, कौन से fields चाहिए, उसमें वो चला जाएगा. ओके, आपके अवेलेबल fields मीन्स आपने बहुत सारे fields बनाए रहेंगे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, देन सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसे बहुत से fields रहेंगे. तो आपको क्वेरी के लिए कौन से fields चाहिए उसमें से वो आपको सेलेक्ट करने हैं. फिर वो एरो बटन रहेगा, वो एरो क्लिक करोगे तो फिर वो वाले फील्ड्स अपने क्वेरी के लिए एंटर हो जाएंगे. ओके, क्वेरी के लिए वो फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी एरो बटन एंड क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन. एक बार आपके फील्ड्स हो गए, मींस मेरे पास में बहुत सारे फील्ड्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ कौन से फील्ड्स लिए क्वेरी के लिए, रोल नंबर, नेम एंड व्हाट, सिटी. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. Now, next step, select a field for sorting the records. Select the order, ascending or descending, then click on the next button. Suppose this is optional, this is not compulsory कि query के लिए ये करना ही है, ऐसा नहीं है. अगर आपको आपके जो भी आउटपुट है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, यू कैन सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग इफ यू विश टू. इट इज नॉट कंपल्सरी. Okay, then you have to press on the next button. Now see what is the next step. In the next step, the user has to select search condition. Select the field, select the condition, type value for condition, then click on next button. So what is the meaning of this? इसका meaning क्या है कि एक बार next इसमें आ गया आपको, तो next में आपको condition देनी है कि कौन सी condition के ऊपर आपको query चाहिए. Means अगर मैंने बोला है कि I want to students who are studying, who are living, not studying, because I'm taking roll number, name and city. So if I want the students list who are staying in city Mumbai, और suppose हम लोग ने local नाम डाले, कल्याण, थाने, डोंबिवली, all these things. So from that also you can say कि मुझे चाहिए city कल्याण or Dombivli, whatever condition you want to give. So you have, what you have to do, you have to select that field. Condition कौन से basis पे चाहिए, मीन्स आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन सा field चाहिए आपको, अभी city का field चाहिए, क्योंकि हम लोग condition किसके ऊपर देने वाले हैं, city के ऊपर. Okay, then select the condition, यानी कौन सा condition आना चाहिए, city should be equal to what. Okay, select what, यहाँ पे condition कौन सा आएगा, equal to. Select the field, means city, condition is equal to, then type value for the condition, means वो क्या होना चाहिए वैल्यू कि कौन डोंबिवली में रहता है. ओके, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, डोंबिवली या फिर कल्याण. ओके, whatever field you want, that condition. See, when you are going to do the practical, that time you will be, and you will understand this very well. Okay, now I'm just explaining the steps because you should know the steps also.
So once you do the practicals, you are able to write the steps also. Okay, so see, so once the condition has been done, means मैंने condition select किया कि city should be equal to Dombivli, then click on the next button. Okay, then if you want to replace original field names with some new field names in the output of the query, then type aliases for each field and click on the next button. What is the meaning of this? Suppose अभी मैंने जो query के लिए roll number लिया है, फिर मैंने student का नाम लिया है और city का नाम लिया है. अगर आपको इसमें से किसी भी field का नया नाम चाहिए, ओके, जैसे अगर आपको चाहिए कि क्वेरी के आउटपुट में वो जो सिटी लिखा है वो सिटी नहीं आना चाहिए, वो कुछ और आना चाहिए, तो फिर आप वहां पे नया नाम दे सकते हो कि वहां पे एलाइसिस करके आएगा. एलाइसिस मीन्स what is this aliases? It stands for another name. Okay, so for any field, if you want to give new name for the query, then you can do that by clicking on the aliases and click on the next button. See, this is also not compulsory. If you want, then only you give, otherwise it is not compulsory. And then you can click on the next button. So the next step is type the name for the query and click on the finish button. Now your query has been finished. Your query has been completed. अभी आपको query के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नाम देना पड़ेगा. ओके, फिर आपको finish बटन पे क्लिक करना है. इस तरह से आपका query create हो गया. आपके query में आपने क्या दिया है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट के नाम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए और सिटी चाहिए. जो कौन सी सिटी में रहते हो? जो कल्याण या फिर आपने जो कंडीशन दे रहेगा डोंबिवली. ओके, सो जो ये सिटी में रहते हैं वो उनके नाम मुझे चाहिए, रोल नंबर, नाम और सिटी चाहिए. सो ऐसा आपने क्वेरी बनाया है. तो नाउ वी विल सी हाउ द आउटपुट विल लुक. नाउ सी दिस आउटपुट माइट बी डिफरेंट, बट देन ऑल्सो वी विल सी. Now first we will see the query wizard. See, like this query wizard will come. Okay, जो भी मैंने steps बताया था उसी तरह से ऐसा query wizard आएगा. उसमें से directly search condition दिया है. देखो, find field selection मैंने बताया था, सबसे पहले आपको field को select करना है. यहाँ पे वो नहीं दिखाया है, लेकिन आपको सबसे ये पूरे steps है. फिर सबसे पहले आपको field का selection करना पड़ता है कि कौन से field आपको query के लिए चाहिए. फिर सॉर्टिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए, वो देना है तो दो, इट इज नॉट कंपलसरी. देन द नेक्स्ट स्टेप इज सर्च कंडीशन. सी योर यू ऑल्सो राइट द फील्ड्स नेम. फील्ड्स नेम मीन्स किसके ऊपर आपको कंडीशन देना है, वही फील्ड का नाम चाहिए. मैंने बोला था सिटी चाहिए था, यहाँ पे सोलापुर लिखा है. So this is inbuilt. I'm using here. But if you are giving city name has Kalyan, Dombivli, whatever, so यहाँ पे आएगा city equal to and कल्याण और डोंबिवली whatever you want. Okay, so इस तरह से ये आएगा. This is wizard का काम ही है, ये ऑटोमेटिकली सब रहेगा, आपको सिर्फ क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है. That's it. So it is already it is making easy way to do the query. Query wizard makes your query easy to answer the questions. Okay, so then after this aliases means what? If you want to give another name for the new field, means for the field whichever is going to come in the query, आपको अगर उसको नया नाम देना है तो आप यहाँ पे aliases पे क्लिक करोगे तो you can give the new name for the fields. Okay, then overview means how your query will look. If you want to see that, then that also you can see it. Okay, then once you have done, then you can click on what? Finish button. Then you have to save the query also, and you are going to click on the finish button. Now see how the output looks. Means जहाँ पे आपने query save किया रहेगा, आप जो भी नाम से आपने query save किया रहेगा वो query आ जाएगी. फिर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा. See, this is the way how your output will look. Okay, so see, यहाँ पे था कंडीशन क्या था कि सिटी, स्टूडेंट सिटी शुड बी इक्वल टू सोलापुर. तो जितने भी बच्चे सोलापुर में रहते हैं उनका रोल नंबर आया, नाम आया और सिटी आया. अगर हम लोग ने डोंबिवली या कल्याण लिखा रहता तो उस तरह से आता. ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर क्वेरी. यहाँ पे हम लोग ने क्वेरी किया था क्वेरी विजार्ड में, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी का आउटपुट देख रहे हैं. सो दिस इज द क्वेरी, and this query we have we have built this query using query wizard. Now next we will see how to write query using query design or design view. Okay, so we will see the next part, that is a query using design view.
Steps to create query in design view. Now, open any saved database, click on the queries object and in right pane, click on the create query in design view option. So what is the meaning of this? So first, जिस database के ऊपर आपको query करना है, पहले वो database open कीजिए, फिर उसके बाद आपको working area में left option, left pan और right pan दिखता है, उसमें से left pan में से आपको query का database object select करना है. कौन सा object select करोगे? Queries. Okay. देन क्वेरीज सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट पैन में क्वेरीज के रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं. तो उसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू. ओके. देन फ्रॉम एड टेबल विंडो सेलेक्ट टेबल एंड क्लिक ऑन दी एड बटन. तो जब आप क्रिएट क्वेरी करोगे डिजाइन व्यू में तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा एड टेबल. तो आपके डेटाबेस में आपने जितने भी टेबल बनाए हैं वो सब टेबल्स आएंगे, लेकिन उसमें से आपको कौन से टेबल के ऊपर क्वेरी करना है. ओके. आपके पास में सपोज स्टूडेंट टेबल है और मार्कशीट का भी टेबल है. तो मुझे अगर अभी परसेंटेज निकालने हैं बच्चों के, ओके, अगर मुझे स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकालना है तो मुझे कितने टेबल्स रिक्वायर्ड है? 2 टेबल्स. आई वांट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आई वांट नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो रोल नंबर, नेम, ये सब डिटेल्स मैंने स्टूडेंट टेबल में रखे हैं और मार्कशीट के टेबल मैंने सिर्फ रोल नंबर लिखा है और स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं. तो मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी चाहिए, नाम भी चाहिए और उनके मार्क्स भी चाहिए. तो इसके लिए मुझे कितने टेबल्स रिक्वायर्ड है? 2 tables. So I am going to select 2 tables. I am going to add 2 tables. One is student table and the another one will be the mark sheet table. Okay. Then take 2 tables which have at least one common field. तो दोनों में अगर मुझे दोनों टेबल्स के ऊपर क्वेरी करना है तो हमेशा दोनों टेबल्स के ऊपर क्वेरी करना रहेगा या दोनों से ज्यादा टेबल्स के ऊपर क्वेरी करना रहेगा. तो एक बात इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू वांट वन कॉमन फील्ड. दोनों टेबल्स के बीच में मुझे रिलेशनशिप फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल आई नीड व्हाट? आई नीड कॉमन फील्ड बिटवीन दिस टेबल. ओके. मुझे कॉमन फील्ड चाहिए जिसमें से एक की प्राइमरी होना चाहिए. ओके. रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कॉमन फील्ड की जरूरत, कॉमन फील्ड का तो जरूरत है ही है, लेकिन उसमें से एक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइमरी की. तो सपोज मैंने रोल नंबर जो स्टूडेंट टेबल का है उसको प्राइमरी की बनाया है और रोल नंबर मुझे मार्कशीट में भी लिखना पड़ेगा. कौन से रोल नंबर को कितने मार्क्स मिले हैं वो भी हम लोग को पता होने चाहिए. ओके. सो दोनों टेबल्स में क्या कॉमन है? कौन सा कॉमन फील्ड रहेगा? रोल नंबर. ओके. देन ड्रैग द कॉमन फील्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल टू सेकेंड टेबल. अभी दोनों टेबल का कॉमन फील्ड क्या था? मेरा रोल नंबर. तो मुझे फर्स्ट फील्ड से वो रोल नंबर ड्रैग करना पड़ेगा सेकंड फील्ड तक. सेकंड फील्ड में जहां पे भी रोल नंबर रहेगा वहां तक लेके जाना. तो एक लाइन आएगा. यू कैन सी अ लाइन. अ लाइन विल बी डिस्प्लेड हैज अ लिंक बिटवीन दिस टू टेबल्स हैज दे हैव वन कॉमन फील्ड फॉर जॉइनिंग. तो एक लाइन आ जाएगा, वो बताता है कि ये दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड है. ओके. सो वो लाइन वो दोनों टेबल्स के लिए रिलेशनशिप है ऐसा दिखाएगा. ओके. देन close the add table window by clicking on close button. Now once you have done, आपका टेबल ऐड करना हो गया, 2 टेबल्स ऐड किए, फिर रिलेशनशिप भी क्रिएट कर दिया. अभी टेबल को क्लोज कर दो, मींस ऐड टेबल को क्लोज करना है. ओके. क्वेरी को क्लोज नहीं करना है. देन in bottom section click inside first column of field row, select one by one field to be displayed in query output. Set each field's visible property on. We can type alias for each field. Now see what is the meaning of this. So suppose आप क्वेरी जहाँ पे बना रहे हो तो वहां पे क्या रहेगा? आपको यहाँ पे टेबल ऐड किया आपने. अभी नीचे का सेक्शन जो रहता है बॉटम सेक्शन, वहां पे आपको फील्ड्स दिखाई देंगे. ओके. अलग अलग रोज रहेंगे. पहले रो में फील्ड रहेगा, फील्ड सिलेक्शन रहेगा. तो फील्ड सिलेक्शन में आपको क्या करना है कि आपके क्वेरी में आपको कौन से फील्ड्स डिस्प्ले होने चाहिए वो फील्ड आपको सेलेक्ट करने हैं. कौन से चाहिए थे हमको क्वेरी के लिए? सबसे पहला फील्ड हमको क्या चाहिए था? रोल नंबर. तो आप कौन सा फील्ड सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले रोल नंबर, देन सेकेंड नेम, देन थर्ड आई वांट सब्जेक्ट के नाम्स. ओके. जो भी सब्जेक्ट आपके इसमें रहेंगे, फिजिक्स, सॉरी नॉट फिजिक्स, बीके, ओसी, एसपी, मैथ्स, आईटी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आप सबको सेलेक्ट करने पड़ेंगे. ओके. देन फिर क्या करना है आपको? आपको सबका विजिबल प्रॉपर्टी ऑन करना है. विजिबल प्रॉपर्टी करके ऑप्शन रहेगा एक रो में, उसको ऑन मींस उसको टिक करना है. ओके. उसके ऊपर क्लिक करोगे तो टिक हो जाएगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
इसका मीनिंग ये होता है कि ये सारे आपको आउटपुट में दिखेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, कौन सा फील्ड नहीं दिखना चाहिए, तो आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ओके, विजिबल प्रॉपर्टी ऑन करने का मतलब है जितने भी फील्ड्स आपने लिए वो सब आपको आउटपुट में दिखने वाले हैं। We can type alias for each field. Alias means what? Another name. Okay. So अगर आपको किसी फील्ड को दूसरा नाम देना है तो आप वहां पे alias करके ऑप्शन भी रहेगा, वो फील्ड का नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग इस टेबल में टोटल और परसेंटेज करने वाले, तो उसका नाम तो इनबिल्ट नहीं रहेगा। फिर जहाँ पे आपने एडिशन किया रहेगा उस फील्ड को आप क्या नाम दे सकते हो? टोटल। और जहाँ पे आपने एडिशन करके डिविजन किया रहेगा, परसेंटेज निकाला रहेगा, वहां पे आप फील्ड का नाम दे सकते हो परसेंटेज। ओके। Then next step, to calculate total of marks in field column, type formula for addition of subjects. तो जो field column था वो field column में आपने जो जो fields आपको आउटपुट में चाहिए वो तो आपने सेलेक्ट किए थे। तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है, उसी फील्ड में आपको लास्ट में आपको एडिशन करना पड़ेगा। ओके, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सबका सब्जेक्ट्स का एडिशन करना पड़ेगा। फिर उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा बाय दिस फॉर्मूला, यू नो द परसेंटेज फॉर्मूला। ओके, सो एडिशन करो एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो लास्ट स्टेप इज टू एग्जीक्यूट क्वेरी। वंस यू आर डन, अभी आपका सब काम हो गया, अभी आपका क्वेरी रन करना है, आपको इसका आउटपुट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेरी रन करना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या क्लिक करना है? आपको रन क्वेरी क्लिक करना है या फिर आपको F5 फंक्शन की प्रेस करना पड़ेगा। फिर जो आउटपुट आपको दिखेगा वो इसी के ऊपर दिखेगा, जहां पे आपका टेबल्स और जो हम लोग ने फील्ड सिलेक्शन किया था उसी के ऊपर। यू आर गोइंग टू सी द आउटपुट अबव दैट window only. Okay, so you are going to see in the same window in the above portion. This output can be saved for further use. So if you want, you can save this query and you can save this output too. Okay, now let us see how it looks. So see, we are going to see this query creation in design view. So this is the query. So सबसे पहले आपको ये नहीं दिखाई देगा, ये आउटपुट है, ये आपने रन क्वेरी किया तो ये दिखाई दिया है, तो ये पहले नहीं दिखाई देगा, पहले आपको ये आता है। ओके, सबसे पहले टेबल्स आएंगे। यहाँ पे मैंने दो टेबल्स ऐड किए, एक स्टूडेंट एक मार्कशीट। ओके, सो यहाँ पे देखो रोल नंबर मेरा कॉमन फील्ड है तो रोल नंबर आया, और यहाँ पे भी रोल नंबर है। ये रोल नंबर प्राइमरी की है, देखो यहाँ पे प्राइमरी की, ये रोल नंबर को प्राइमरी की है क्या? नहीं, ये प्राइमरी की जो है ये अलग फील्ड को है, ये किसी और टेबल के साथ रिलेशनशिप के लिए रखा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों है कॉमन। ओके, तो यहाँ से मैंने लाइन को यहाँ तक ड्रैग किया तो ये लाइन आ गया। सो ये लाइन, व्हाट दिस मीन्स, इट मीन्स दैट both tables they are having the common field as roll number, and now the relationship is created between this both tables. ओके, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये फील्ड का रो रहेगा, ये रो में फील्ड्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो जो आपको चाहिए, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एनरोलमेंट नंबर इस फील्ड का आया है। आपको नहीं चाहिए तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सब्जेक्ट के नाम, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, आपके सब्जेक्ट आप लिखो और वो यहाँ पे सेलेक्ट करो। ओके, वंस योर सब्जेक्ट हैज बीन सेलेक्टेड, देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको टोटल करना है। तो आप कैसे टोटल करोगे? देखो, इन्वर्टेड कॉमा में फिजिक्स लिखा है, आप इन्वर्टेड कॉमा में आपका सब्जेक्ट का नाम प्लस दिस सब्जेक्ट देन अनदर सब्जेक्ट ऐसे लिखना है। देन सिमिलरली परसेंटेज, यहाँ इस कॉलम में आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये एडिशन को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3। आपने अगर 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 करो, 6 लिए हैं तो 6, और यहाँ पे डिविजन उतने सब्जेक्ट से ही आएगा, जितने सब्जेक्ट लोगे उससे ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देन सी हियर यू कैन सी द अलाइस। दिस अलाइस मींस व्हाट, यू वांट टू गिव द अनदर नेम। अगर आपको इसको दूसरे नाम नहीं देने इन सब फील्ड्स को तो मत दो, लेकिन इसको तो देना पड़ेगा क्योंकि इनके लिए कोई नाम नहीं है। तो फिर ये आउटपुट में अगर आपने यहाँ पे अलाइस नाम नहीं दिया टोटल परसेंटेज, तो ये जैसा लिखा है वैसे ही आउटपुट में दिखाई देता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा, टोटल एंड परसेंटेज। ओके, देन टेबल, रोल नंबर कौन से टेबल से आया है? स्टूडेंट टेबल से। नाम कौन से टेबल से आया है? स्टूडेंट टेबल से। ENO कहाँ से आया है? मार्क्स टेबल से। ओके, देन फिजिक्स, ये सब ये इस टेबल से आए हैं, तो इनके टेबल के नाम आ गए। Okay, so likewise your table name will come, whichever table you are creating, then and whichever fields you are selecting, that fields is going to get displayed over here. Okay, now see visible property on. मैंने visible property on किया means what, हम लोग इसके ऊपर क्लिक टिक करेंगे,
मीन्स क्लिक करोगे तो ये टिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सबको टिक मार्क दिख रहा है, यानी ये सब हम लोग को विजिबल है, यानी ये सब हम लोग आउटपुट में देख सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड को नहीं देखना है आउटपुट में, उसको क्या करो, उसको क्लिक ही मत करो। उसको क्लिक नहीं करोगे तो वो विजिबल नहीं होगा। ओके, सो सी द आउटपुट, सो दिस इज द आउटपुट। ओके, यहाँ पे देखो टोटल आ गया, परसेंटेज आ गया कैलकुलेट करके। सो दिस इज हाउ योर क्वेरी विल लुक इन डिजाइन व्यू। समझा आपको डिजाइन व्यू में कैसे दिखेगा? सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग क्वेरी इन डिजाइन व्यू। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स। Form creation. Form creation we are going to see using this wizard only. So see the steps. So what is the first step? As you all know, first you have to select the database. You have to open the database. Now from that, from the left panel, you have to click on the forms object. फिर forms object के बाद क्या करना है आपको? Right pan में से use wizard to create form पे click करना है. Okay. Then you have to select the name of the table. So from the table, from based on which table you want to create the form, select that table. जिस table के ऊपर आपको form create करना है वो table का नाम select करो। फिर उसमें उस table में बहुत सारे fields रहेंगे, उसमें से आपको जो fields आपके form के लिए चाहिए वो fields आप form के लिए select करो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक field select किया, फिर क्या होता है, arrow पे click करो, फिर next बटन दबाओ, फिर से दूसरा फील्ड सेलेक्ट करो, फिर एरो पे बटन, लाइकवाइज। ओके, इस तरह से आप पूरा होने के बाद क्या आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन। Then once you're done, then you have to select any one arrangement for main form for placing the controls and click on the next button. So once you're done, एक बार आपका हो गया पूरा अरेंजमेंट, मीन्स आपको अरेंज कहाँ पे करना है, मीन्स आपके कंट्रोल्स, आपका जो फिल्स आपने लिए हैं वो आपको फॉर्म पे कैसे प्लेस करने हैं वो आप अरेंज कर दीजिए। एक बार आपका हो गया तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। Select style for the form, click on the next button. Now what type of a style you want for the form, that you have to select and then you want to click on the next button. Now once you are done, what you have to do, you have to write the name for the form. पूरा फॉर्म आपका क्रिएट हो गया, अभी आपको फॉर्म को नाम देना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। Then add new record, click on new record icon present on form navigation toolbar. Fill up the record and click on save record icon. Click on the close button to close the form window. So see, now whatever records are there, that records, suppose आपने 10 records बनाए हैं आपके टेबल में, तो पूरे फॉर्म में आपको 10 records दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको नए records ऐड करने, if you want to add new record, then you can see that there will be one icon present over there, new record icon रहेगा वहां पे नेविगेशन टूलबार पे, वहां पे आप क्लिक करो और न्यू रिकॉर्ड फिल करना। ओके, फिर फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। After clicking on the save record icon, you can close the button and then you can close the window. Okay, form window आपको close करना पड़ेगा। So this is all about the creation of form, how to create the form. Now we will see how it looks. Okay, so see कैसे दिखेगा। See, this is the form, outlook of the form. So यहाँ पे मेरे को जो जो fields चाहिए तो वो मैंने ऐड कर दिए। मैंने रोल नंबर लिया, नेम लिया, सिटी लिया और मोबाइल नंबर लिया। These are the fields which I have selected from the table student. Okay, then ये जो मैंने कंट्रोल्स प्लेस किए बराबर, यानी रोल नंबर के सामने रोल नंबर कंट्रोल, फिर नेम के सामने नेम, आप इस तरह से रख सकते हो या फिर आप इस तरह से, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर इसके नीचे ऐसा रखना पड़ेगा। ओके, इन वॉट एवर फैशन यू वॉन्ट यू कैन प्लेस योर कंट्रोल्स। ओके, दिस ऑल आर द कंट्रोल्स। फिर इसको प्लेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टाइल देना पड़ता है, जिस तरह से यहाँ पे ऑरेंज कलर का कलर दिया है। सो दिस इज अ स्टाइल गिवन टू दिस फॉर्म। सो वॉट एवर स्टाइल you want to give, you can give that style. So once it is done, now see here record, आपको आपके इसमें जितने भी रहेंगे वो रिकॉर्ड दिख रहे हैं। कितने रिकॉर्ड है, 7 में से 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो here you cannot see the adding record, but when you will do the practical I will show you that also, how to add the new record. Okay, so this is all about the forms. Okay, how the form looks.
Now next we will see what next last part is remaining, and that is what query, sorry, not query, last part is what report. Okay, so that we are going to see. Report generation. Steps to create a report are as follows. First, so what is the first step? As you all know, open a database. From the left pane, click on the reports object. From the left pane, now you are going to select the last object of that is reports. Okay. Now once you are done that, then from the right pane, आपको कौन सा इसको click करना पड़ेगा? From the right pane, you want to click on the use wizard to create the report. Then select name of the table. Same thing you want to do here also. जिस टेबल के ऊपर बेस आपको रिपोर्ट बनाना है वो टेबल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. मैंने बोला था ना टेबल सबके लिए कॉमन है, सो टेबल सबसे पहले बनाना पड़ता है. ओके, देन आपको जो फील्ड्स चाहिए, आपके अवेलेबल फील्ड्स में से जो भी फील्ड्स आपको चाहिए रिपोर्ट के लिए, वो फील्ड्स आप रिपोर्ट में सेलेक्ट कीजिए. ओके, क्लिक ऑन दैट एरो एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. Then once you're done, labels for the fields can be changed with the new labels to display in report and click on the next button. Labels for the fields. आपने जो भी नाम दिए, अगर आपको वो चेंज करना है तो आपको जो भी लेबल देना पड़ेगा, आपको नया लेबल जो देना रहेगा आप वो दे सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. रिपोर्ट में जैसे दिखना चाहिए लेबल्स आप वैसे लिख सकते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना पड़ता है. Then if you want to see the records group wise, like example city wise, then add a grouping level like grouping level, click on a field. तो अगर आपको ग्रुपिंग वाइज रिपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए या मुझे स्टेट वाइज रिपोर्ट चाहिए, लाइक दिस वी सी ना, यू आर हेयरिंग ऑल दिस थिंग्स ऑलवेज. ओके, सिटी वाइज, देन स्टेट वाइज रिपोर्ट. ओके, सो आपको जिस वाइज रिपोर्ट चाहिए आप उस वाइज वो रिपोर्ट आप सेट कर सकते हो. ओके, यू कैन ग्रुप इट. देन एड अ ग्रुपिंग लेवल, क्लिक ऑन द फील्ड. नाउ यू आर, इफ यू वांट your record on the group wise means city wise, तो आपको वो grouping level add करना पड़ेगा. Then click on arrow button and click on the next button. Select a field to sort the data, click on the next button. So you want to sort the data. Okay, and then you want to click on the next button. Choose layout and orientation, click on the next button. Again आपको layout और orientation कैसा दिखना चाहिए, आपका रिपोर्ट किस तरह से, कौन से लेआउट में आना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो भी आपको वहां पे चॉइस रहेगा. आपको जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं. फिर आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा. देन टाइप टाइटल फॉर द रिपोर्ट, क्लिक ऑन फिनिश बटन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू वांट टू टाइटल फॉर द रिपोर्ट. आपको रिपोर्ट के लिए कौन सा टाइटल चाहिए वो आप टाइप कीजिए एंड देन यू वांट टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन. Lastly, report will be displayed in read-only mode in the form of LibreOffice Writer file. तो आपको जो रिपोर्ट आएगा वो रीड ओनली फॉर्म में रहेगा. यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. ओके, यहाँ पे हम लोग एडिट नहीं कर सकते, हम लोग डिलीट नहीं कर सकते. जो जिस तरह से आएगा उस तरह से वो रिपोर्ट में आने वाला है. ओके, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द रिपोर्ट विंडो. सो वंस इट इज डन यू कैन क्लोज द बटन टू क्लोज दैट रिपोर्ट विंडो. ओके, so this is how we are going to create the report. Now we will see how the report looks. Report. So see, this is one of the layout and orientation of the report. You can do in another layout also. Okay, so this is the one way. Here what we have done, we have grouped it in city wise. Okay, हम लोग ने report किसके ऊपर बनाया है, city wise पे. So in Ahmednagar, how many students are staying? 2 students. 107, that is Sneha and Shweta stays in Ahmednagar. Kedar stays in Bhid. Avdu stays in Pune. Aditi, Prajakta, Amay, they are staying in Solapur. So this is the city wise report. Okay, now here one thing you can notice that the city, it has been sorted. City को हम लोग ने sort किया है. City को किस order में sort किया है, ascending या descending? It is sorted in ascending order. Okay, similarly roll number has been sorted in descending order. See here you can see 107 comes first, then 104 is coming. Here also first 106, 105, 101. So it has been sorted in descending order. So this is up to you. It is not compulsory that you have to sort it. If you don't want, you can not sort. That will also do. So
In this way, we have completed all the database objects. So first was table. So table is what? Why we are using table? It is used to store data in the form of columns and rows. Then next was query. Query means answer to the question which can be based upon any criteria. Next, form. Form is used to enter the data or fill the form. Then last is report. Report is nothing but it is the summary of whole data which can be in the printed format. Okay, so this is all about database objects. So this much for today. Next time, next thing we will see in the next lecture. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.